morning, all. Thanks for joining. I would request if you're not speaking, just keep yourself on mute. Let's start the session. Just a quick introduction about myself. So, my name is Amar. I I have a lot of interest on the stock market and personal finance side, and I do stock market sessions regularly. I'm not SEBI registered, so there is no stock tips or something kind of a thing you would be expecting from my side. And before we get started, I hope everybody is okay with Hindi and English mix, or if anybody who is not able to understand Hindi, I can keep the session in entirely in English as well. So let's make it as a mix for Hindi and English. Okay. And if you're not talking, just keep yourself on mute so that you should be able to hear everybody loud and clear, and understand the things well. So yeah, so it's been almost 5 years, 5 to 6 years I'm into stock market, and I regularly do such sessions जहाँ पे I used to share my knowledge. As I said, I don't share any stock tips or something. If you're expecting for this that I would be giving any stock tips, so probably this is not the best platform for you. But yes, if you want to discuss, you want to make a healthy discussion about any stocks, any fundamentals, technicals, or any sort of things you see, which can be discussed, we can do this over this session today itself, and I'll be having such more session regularly on that. So let's get started. I'll open the forum for everybody. Just ask one question for each, then we'll have, if you have multiple questions, then we'll come back again. Yeah, so let's get started. Anybody has any question, you can ask any type of question related to stock market or any stock if you have purchased or you're planning to purchase. If you want to hear my view, then it's fine. So you're on mute, Mr. Ramesh, you're on mute. Sir, I don't have any experience. Just I put and just no experience. What you are expecting from this session? No, actually, I don't know anything. I want to learn something about stock markets. That's what. Just Great. So definitely. We have so many people from our township itself. So I stay in township only. So probably I am planning to have a session in township itself for the township people. So where basic understanding of the stock market and the mutual fund and all that, probably I'll be discussing with you all. So that definitely will going to help you for that. But anyways, this session will also help you to understand, to get started and get some confidence to about the stock market. Thanks, and then Hi, Amar. good morning. I spoke to you. Good morning. Yeah. I spoke to you yesterday, right? Yeah, we spoke. So actually, I have started investing since 2008 only. Mm-hmm. But the past years, I've been doing trading also. But I just wanted to hear from you what you say about stock market. I mean, from 2008 you're invested in stock market, so you know much more better than me. So when you are quite a good experience on that. Stock market is a vast subject, right? Okay. Investing is simple thing. Okay, you invest for a good. No, that's the problem. So that's the problem. Investing is not such a thing that you invest and forget. So when you invest and forget, then definitely the stock will forget to you as well. Yeah, that's You true. have to- you have in the sense, okay, you have to keep watching for a certain period of time. Yeah, definitely. So how has been your journey till now from 2008? Because you have seen a lot of market corrections and definitely market rallies as well. So how do you see the stock market as a... See, investing in stock market is definitely a better option compared to other investment. I mean, see, it is like you should not keep your eggs in one single basket. So there are multiple ways of investing. Okay? You can invest in stock market, you can invest in real estate, you can invest in FDs, mutual funds. There are so many ways. Okay? So you divide your investment. So definitely the diversification Diversification is very important, actually required.
See, sometimes if you look at the stock market is, for the past couple of months, it is going down. Okay. So at the same time, the FD rates are getting increased. Yeah. So not a single investment will always give you the consistent results. Definitely. So you have to basically watch Right. the market, investment. But long-term perspective wise, stock market is always better. Yeah, definitely. Whosoever is new to stock market, so I also think the same way you're talking about that. This is a long-term investment. I would say the tool where definitely see the problem is with in India, we have been always told about to save money, but it is never been told to us what to do with the saved money. So if I have some 1,000 rupees in with me which I have saved, nobody has told us what to do with this 1,000 rupees money. So okay, traditionally what we have seen that okay, just invest that into FD kara lo, and then maybe some LIC policy le lo. But there is a lot of things to be discussed which are if I am investing something on any of the instrument, how much return I am expecting for. Definitely for a long term perspective I am talking about. When I say the long term, nothing less than for me nothing less than 10 years is the long term, is not a long term. So anything 10 years plus is I consider as a long term. So during a tenure of that 10 year or 15 years or 20 years, how much is the return? And that is more of the annual return, which is CAGR. I'm getting it. So, and if the annual return is something which is not beating the inflation, and if I say beating the inflation, if it is not beating the inflation by at least 4 to 5% more, then I don't think it's a smart way. At least for me personally, it is not the smart way to invest your money, because for example you said about FD is giving good return from last couple of months, 7% or something it is getting, but it is hardly beating the inflation is going to be 6.2%. I mean roughly fluctuating from 5.5 to 6.5%. But if we say from last last 20 years or maybe 15 years, what is the FD return? It is roughly 5.5 to 6% is what the FD return we have been getting. So if I am getting a 6% of return and my inflation is 6%, definitely I am not making any money out of whatever I have invested, and then definitely I have to bear all the taxes, TDS and all this. Definitely it is giving a negative return to me. So there are various investment tools which we can also think of, like okay, that PPF is one of the option which gives roughly 8.8 to 8.1% of the return, which meets the inflation by 2.5%, but still not a better way. I mean, so overall idea is to, first of all, we need to have all the options open. We have to know what all options available. So mutual fund is one of the things, but many people would say don't go with mutual fund. If you have the knowledge, if you can study about the stock market, invest directly on the stock, because mutual fund will have that commission there. XRR is something which kills your overall corpus, which has been collected, which has been gathered in over 20 years. So if you have some knowledge, if you can gain some knowledge, invest directly on the stocks, that is also fine. But yes, mutual fund is one of the instrument which can give you 12 to 14% annually, which I'm talking historically. What would happen in the future, nobody knows. But yes, and that is there the stock market is, which if you see the Sensex or the Nifty from last 20 years, Nifty index itself has given a CAGR of 15%, so which is quite a good return, considering 6.6 to 0.5% is the what the inflation is all about. So yes, so that is how I see stock market is one of the best tools when it gets into the investment, investing your money. Definitely we need to have the diversification, and diversification could be of a different type. So definitely investing in a different instrument. I personally don't feel to invest in the FD. So because FD is something which does not grow my money.
But yes, if you want to protect your money, probably if you have some X lakhs of money and you want to protect it for 6 months and you have some investment ideas, definitely you have to go with a FD, and you should invest into FD, and so that it can protect your money. But investing in stock market for 6 months, definitely it might be a great possibility that your money will decrease. So to protect your money, FD is the best option, but to grow, I don't say that FD is a good option. So you have to have, because होता क्या है ना, even if you invest in FD, let's say you have to open FD in SBI or HDFC बैंक, किसी भी बैंक में open किया, then how they are giving you 6%? Because they are taking money to stock market itself. Every investment scheme you are investing, they are into stock market. They are getting invested into stock market, and they are earning 14-15% return, and then they are giving you 6%. So if it is my money, it has to be, first of all, it has to be in my control, where I want to invest. And before that, I should be knowing where to invest. Until I open up my mind to accept the facts and accept the thing that are the various investment scheme, I will keep on investing my money probably throughout last 30-40 years, which we have been hearing from our parents also, to invest in FD, and then at the end of the day, and we are struggling to have, we are not able to create some good corpus. And FD, I don't think FD will be able to meet us with that, because once your FD get mature, you have to pay the taxes. And then at that time, what is the value of your money? Because inflation is always there. It is eating up your money. After 20 years, with FD of 10 lakhs, if you get some 20 lakhs, what is the value of your 20 lakhs after 20 years, which is roughly 6 to 7 lakhs? So you have to have that something to beat the inflation, at least marginally by 4 to 5% minimum. And that is where the stock market, mutual fund, probably real estate is one of the option, but that demands a lot of it's a capital intensive. You don't, with a small investment like 1 lakh, 2 lakh, you can't go with this real estate. So that is what my thought process is. But yes, anyways, any other person who wants to give their thought, it's really welcome. Hi, Ahmed. Hey, hi, this one. I have a query actually. Actually, I'm not, you can say I'm not new or I'm not very old in the stock market. But I have a general like, since the day I'm investing in stock, I pick up some stocks. But I just thought, you need to diversification minimum if you are in stock market. So, how you pick these stocks and how you decide you should exit from the from there, because that is, I think, a very difficult decision to make when you pick the stock and when you want to make exit in that stock. Yeah. I've looked at a lot of losses in the past years from multiple stocks. So I just wanted to know how we can do the diversification, even with the stock market. Because we have a lot of options in the stock market. Like we can invest in gold stock, we can invest in real estate with a small amount of money. Yeah. So how long you are there in stock market? I have started from 2016 actually. 2016. So it's quite about. But I'm not doing that regularly. So once in a while, like once in a month or 2 months, I log in and I check. Okay. So see, it's a very good question, and it's a genuine query from all of the people who probably are new to stock market, and even then who are in the stock market from probably so many years. Also, they have the same question. And to be very honest, I'm not the best to answer it, but I can give you my view when I choose any stock, why I have chosen that stock, and what is my view, what all analysis I do, and then what is the setup I used to follow. So first of all, before anything else, before we buy any stock or do any trading, long term, short term, whatever it is, first thing has to be very clear in our mind that why we are here in stock market, why I am not doing any other investment, or to be very precise, why I am
here in this stock market? What is the purpose of being here? That is what very important. And you have to decide yourself, who are you? Means there are two types of people in stock market. Three types, in fact, I would say. First would be the investors. So investors are the one who will invest their money. Forget about for a moment, let's park this question that which stock to invest, but whatever stock they will choose, blue chips, mid cap, small cap, whatever it is, they invest, they do analysis, they invest, and then they keep it for a longer period of time. Let's say 5 years, 10 years, whatever it is. Second are the traders. Traders are the one who buy the stock. They have some target in their mind. Okay, this is 100 rupees stock, and if it goes to 120, I'll book the profit. 20% is more than enough profit. They will not wait for, and it could be in a day they want to looking for, or maybe a week or 2 months, 3 months, they will keep that stock with them, and then they will book the profit. And third are the confused one. They even don't know who am I. They pick a stock, they buy that stock, but they don't know whether I'm buying it for 2 months, 3 months, or I'm buying it for longer period. They came up in a mindset that okay, I'll book it for 2 months, and I'll keep it for 2 months or a week. I'll see a profit and then I'll book it. But the moment when they start seeing it in a loss, suddenly they turn to be an investor. So they don't have any strategies to be defined. So you need to have your strategies defined. And for me, what I do, I have written my strategies on a plain paper. Every day I follow that strategy. If I'm buying a stock, whether I'm buying it for a long term or I'm buying it for a trading perspective. Because buying a stock for trading, buying a stock for investing have two different approaches. If you are an investor, definitely you will look at into the fundamentals of the stocks. Fundamental of the stock means you have to read through a lot about the business, not the stock. Price is secondary thing. Price is the outcome of the business. What company business? For example, Reliance stock price is, let's say, 2,000 rupees. This 2,000 rupees price is why? Because Reliance business, how Reliance business is doing now. If from 2000 it has become 2500, it is not the stock which has moved 500. It is what, because of that Reliance ka business thoda bad gaya hai. They have expanded their arms into retail, they expanded arms into Jio and 5G. That is why this has become 2500. So we have to understand Reliance as not stock but as a company, right? Second, if I am a trader, I don't care about Reliance ka fundamental. Could be if Reliance is booking profit हो रहा है or loss हो रहा है, how much is the revenue, I don't care. I will see the Reliance का chart on my trading platform. I will do the technical analysis instead of a fundamental. I'll do the technical analysis. Okay, this is what my support, this is what my resistance, this is what some of the indicators I will be putting. If that stock is 100% fit in my strategy and the setup, I will buy it, or you can also sell the stock. I can sell it, whatever I want to do. If I see that this stock can go 10% in maybe through 3 months, I will buy it, and I'll have a target set in my mind. Okay, Reliance, if it reaches from 2000 to 2500 rupees, I'll book the profit. It is not that the greed will come out of okay, now abhi 2500 hoga, abhi 2700 hoga. Probably from 2500 it may come back to 2200. Then it is not that 200 profit you are making, it is that 300 loss you are making from out of the profit what you can make. So that is the rational thing, we have to think through. Now coming to your question, so sorry if I take a lot of time to come to your question, but this is what the very important thing which everybody has to understand. Who are you? You have answered it very detailed. Yeah. So now coming to the stock picking. So how to choose stock when you are already there from 2016. So see, stock picking it's an art. Why it is an art? Because you have to invest a lot of time, you have to study through a lot of things. If you are a trader, then you have to read through the technical analysis. Chart understanding बहुत ज़रूरी है. You have to read it through, you have to learn it through, because it's your hard-earned money. You don't need to want to lose that your money in the stock market.
Second, if you because if you know the process, if you know how to earn money through stock market, see, earning money, it seems very, kind of a what we have hearing from so many years, that stock market is a satta bazaar. So it is not a satta bazaar, it is pure play maths. You do calculation. If something is mapping with your calculation, then you have to go with it. If not, then don't go with it. आप न्यूज़ देखोगे, आप इंटरनेट पे देखोगे, टिप्स लोगे, सब करोगे, then you cannot make money out of stock market. That is where the recent report from SEBI has released, where 89% of the traders or an investor, they are on loss, and loss is on an average it is 1.5 to 1.8 lakhs for year 2022-23. Only 11% are the one who are making money. So you can understand that those 11% have all that money of 89%. So you think that जो 11% है उनके पास कितना पैसा होगा. So if we say that stock market में सिर्फ loss होता है, so that is not the fair thing, because stock market is not something जो मेरा पैसा रखता है. Stock market में दो लोग हैं, buyer seller. If I am at loss, definitely somebody would be in a profit. वो मेरा पैसे का प्रॉफिट पे होगा. So if I have to win, I have to become somebody. If I keep on losing my money, we have to go back and think through why I'm losing money. There are multiple reasons. So you can also watch my YouTube videos, short videos. I have made a complete list of trading mistakes or stock market mistake playlist I have prepared. I'll share the link after the session also. A lot of basic mistake we do. That is where we make a loss, and then after 6 months, 1 year, 2 years, हम बोलते हैं stock market में तो यार loss होता है, it is not for us. Then we keep on investing on some other assets which definitely, we are not able to see, but they are eating up our money, like FD, or we'll keeping it in our saving account. So 4% में we are happy, but we don't understand that आज का 100 रुपए कल का सिर्फ 96 रुपीज़ बचता है एक साल बाद, now 94 रुपीज़ बचता है because of inflation. So that is how it is. So stock pick करने के लिए definitely, if you are a long term investor, you need to have a diversified portfolio. When I say diversified portfolio, it is a type of the stocks you are choosing. So it could be a blue chip stock, it could be a Nifty 50 stocks, it could be your all pure play large cap stocks, it could be your mid cap and small cap mix, and it could be some of the time very less percent of your total capital can go into penny stocks. I don't prefer to work with penny stock, but yes, sometimes if you can choose a penny stock based on the business of that stock, it can make you definitely rich in a longer time. Like for example, Titan 2000, I think year 2000, Mr. Junjanwala bought it at 3 rupees. That time it was a penny stock. We all know what he has earned through Titan also. And then Bajaj Finance in 2004 or 5, Bajaj Finance was just 5 rupees. Now it is almost 6,000 rupees, or it has already touched to 8,800 rupees. So can't say that penny stock cannot make you big, but it is not the stock, as I said, it is the underlying business which you have to understand. So stock market study we have to do. We don't need to learn the stock, we have to learn the business. कंपनी क्या करती है, मैनेजमेंट कैसा है, उसका प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, उसका फ्यूचर पर्सपेक्ट क्या है. इफ any company who is still talking on a traditional things, like you see Tata Motors and Maruti is the number 1 car making company in India, but still the stock return of the Tata Motors from last 2 to 3 years is marvelous. It is out of the world than Maruti. Why? Because Maruti is still talking about the traditional petrol diesel car kind of a thing, but Tata Motor is way beyond that thing, and they are making future cars like EV, hydrogen, and all those things. They are working on it. They are creating an ecosystem for that EV, and that is where the Tata Motors and the other companies of Tata's, which are connected through this EV ecosystem, like Tata Elxsi or even Tata Steel for that matter, they have given a good return to investors past 2-3 years after Corona, in fact.
they have given. So Tata Motor from 65 rupees, it was probably April 2020, it was 65 rupees. Now it is some 500, 600 rupees. Now it is trading. Just 2 years, two and a half years. But Maruti अभी का वही है. It's not, has not given much return to the investors. So वो फ्यूचर को देखना है, बिजनेस क्या कर रहा है, उसमें एक्सपेंशन कैसा हो रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल एनी company who is coming into maybe a retail sector or FMCG sector, so there will be a lot of competition. What are your competitions are, you have to think through. FMCG में big giants like HUL, Hindustan Unilever है, Britannia है, अपना Nestle है, all those are in our FMCG, and they are doing great business. HUL is one of the things. Even the Patanjali has come into market. They are now listed also, like in the form of what call your soya, Ruchi soya. But still Ruchi soya का return वो नहीं है जो HUL का return, and we cannot rely on a company which is, so HUL is something we are using day in day out. I am spending my at least some 2,000 rupees a month on HUL product. If you go to your washroom, you'll see most of the products are from HUL. If if you are feeding your baby Nestle ka, everybody is using Cerelac or maybe Maggie. It's a product which we are using, so invest in those which we are consuming. Don't be a consumer of a product itself, be a customer of a product also. Buy some stocks, hold it, because these are not going anywhere. If HUL cannot give return in 20 years, if Reliance, TCS, Infosys or maybe Tata Motors cannot give you a return in 20 years, then India किधर जाएगा? India नहीं grow करेगा. If India is not growing, then FD also will not give a return, right? Because from where that FD में जो पैसा लगाते हैं, SBI, where they will be investing, they will be investing in stock market. So if stock market is not giving return to them, how can they give return to us? Then there is no point of. We have to see the growth. And with this current government, I mean, I'm not in political discussion, but with the current government, the approach they are following, definitely in next 10 to 15 years, इंडिया में बहुत बढ़िया ग्रोथ हो गया. सो वी हैव टू थिंक टू विच फ्यूचर, वेयर द फ्यूचर इज गोइंग, एंड वी हैव टू फॉलो द ट्रेंड. इट इज़ नॉट ओके नहीं लेट्स बी एन ऑर्थोडॉक्स kind of a mindset and follow what everybody is doing. So you have to swim against the tide, then only you can win. You may lose also, but there is no harm of losing if you can learn something. So you have to diversify your portfolio in such a way, and then also you have to diversify your portfolio on the sector specific. So you cannot have a lot of your investment on a specific sector. So banking है, IT है, auto है, chemical है, real estate है. You have to diversify on a sector specific also. So and you have to decide, you have to divide your capital in such a way that you should not be heavily invested on a single sector, because there could be one stock or there could be one sector which may not perform. So if you have invested, so if you ask my portfolio is well diversified, probably a bit higher side on the IT, because IT is something sector which I could see is wherever we can see a growth, it is always enabled with IT. So जो भी sector grow करेगा on a underlying IT जो है वो grow करेगा India में, especially in India. So and definitely when I say IT, I am more focused towards the artificial intelligence, machine learning, drone technologies, all those technology based companies. I am more focused. So that is where I am bit of highly invested towards IT, then banking, then probably chemical and real estate and personal what do you call it, consumer based businesses, because consumer based businesses will never go. We cannot stop eating food, we cannot stop eating water or some cold drinks and all. And then sector is something like pharmaceutical or hospital. The more we are progressing, the more we are prone to get diseases. And then after the corona, it has become very evident that anything can happen. So definitely medical sector is something which is going to grow,
and you can see even this city where I'm staying in Hyderabad, I could see it's a hub for medical itself, and every day कुछ ना कुछ मेडिकल में होता ही है. दी हॉस्पिटल्स ओपन हो रहे हैं and all. So it will be there. So we have to identify which sector is going to grow. So you cannot be 100% perfect. You have to have only 10% true about yourself, whatever investment you are doing. 90% times you will be fail. So yesterday only I made a short video saying that but people are much afraid of even taking a risk. So they can drive a car with 150 kilometers per hour speed, but they cannot invest their 1,000 rupees in stock market. They can risk their life, but not their money. So that is what our mindset have been from last so many years. But I mean, it's a personal choice. So I thought, okay, don't risk my life. Just if I can put my money on risk, that is fine. Probably मैं सही हो जाऊंगा, probably मैं गलत हो जाऊंगा, doesn't matter. अगर मैं सही हो जाऊंगा तो मेरे को रिटर्न मिल जाएगा, अगर मैं गलत हो जाऊंगा तो मेरे को लर्निंग मिल जाएगी. But eventually I will be having something which if I keep on doing the orthodox thing, I cannot even break the barrier and do things in a different way or different things what others are doing. So yeah, I think I spoke a lot. Any please, any other question? Thanks. And if you guys have any other question also, you can just मेरा number है, WhatsApp number is there. You can ping me on WhatsApp. I'm always ready to discuss. I mean, I love to discuss about finance, about stock market and all those things. Thanks. Yeah, Rishikesh. मेरा एक क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे कि अभी ये बीच में न्यूज आ गया, सडनली एकदम शेयर गिरना चालू हो गया, तो उसमें मैं एग्जिट भी कर नहीं पाया, इतने सडनली डाउन हो गए, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में तो हनुमान चालीसा ही पढ़ सकते हैं फिर. तो देखिए क्या होता है कि कोई स्टॉक है ना, स्टॉक की एक टेंडेंसी होती है. आई थिंक आप अडानी की बात कर रहे हो, अडानी स्टॉक्स की, राइट? नहीं, वो तो गिर गए, उसके साथ में भी और भी सारे गिर गए. हाँ, सी, जब वो एक मूवी का डायलॉग था, आई डोंट रिमेम्बर विच मूवी, उसमें कहते हैं कि इट इज कॉल्ड अ कोलैटरल डैमेज, कि अगर एक 20 माले की बिल्डिंग गिरती है तो 10 माले की बिल्डिंग पे भी असर पड़ता ही है, राइट? बराबर. सो सी, आई विल टेल यू प्रॉब्लम क्या होती है ना, 89% लोग लॉस में, मीन्स 100% में 89 लोग जो हैं वो रिटेल इन्वेस्टर हैं, ये श्योर शॉट है. और 80% मान लो चलो रिटेल इन्वेस्टर है. रिटेल इन्वेस्टर ना बहुत ही वोलाटाइल होता है, मतलब वो छोटा सा प्रॉफिट और छोटा सा लॉस इस पे ही जीता है. एंड प्रॉब्लम क्या है कि हम लॉस को हमेशा कैरी करना चाहते हैं, बिकॉज हम होप करते हैं कि आज ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा. प्रॉफिट को कैरी नहीं करते. अगर मेरे को स्टॉक में 2000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो मैं उसे बुक कर लूँगा. अगर 2000 का लॉस हो रहा है तो मैं वेट करूँगा कि ठीक है अभी ऊपर जाएगा तो मैं निकलूँगा. बट ऐसा कभी होता नहीं है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो मैंने पहले बोला था कि हम जब स्टॉक ले रहे होते हैं ना, जब मुझे कोई सब, आपको अगर आज कोई कार खरीदनी है या कोई एसी खरीदना है, बेसिक सब 50,000 रुपये की चीज़ भी खरीदनी है ना, एसी खरीदना है, तो भी आप ना कम से कम नहीं तो 4 दिन तो रिसर्च करते हो कि ये कौन सा एसी लिया जाए, 3 स्टार अच्छा है, इन्वर्टर वाला ले लूँ, कॉइल कौन सी होनी चाहिए, सपोर्ट किसका अच्छा होगा. मैं एसी लेने के लिए मैं बात कर रहा हूँ 50,000 रुपये की चीज़, और स्टॉक लेने के लिए तो अमर ने बोला कि TCS ले लो, तो उठा के TCS ले लेंगे. मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, बट एग्जांपल बता रहा हूँ. रिसर्च नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए 2 चीज़ें. रातों रात अमीर बनना है पहले तो, क्योंकि सुनते रहते हैं कि बन जाते होंगे लोग. दूसरा ये कि कौन दे इतना टाइम. तो यार टाइम नहीं देंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे? कमाना भी है पैसा और टाइम भी नहीं देना है, तो ये 2 अलग चीज़ें हैं. अब क्या होता है कि कोई स्टॉक हमने ले लिया, अब वो गिर गया,
तो ठीक है, स्टॉक नीचे गिर जाएगा, यू नेवर नो। तो स्टॉक का ही एक जर्नी है। आपने आज जब स्टॉक खरीदा है, मैंने कल ही ये वीडियो डाला है तो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन है। आप जब लेते हो ना तो आप या तो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बन जाते हो स्टॉक के, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चल रहे हैं। अब वो उससे ब्रेकअप करेंगे। जब मैंने 250 रुपये पे कोई स्टॉक खरीदा है ना, तो ये तो पक्का है कि किसी ने 250 पे बेचा है। मैं 250 पे ये सोच के खरीदता हूँ कि ये 300 जाएगा, और वो 250 पे ये सोच के बेचता है कि ये 200 जाएगा। अब या तो वो सही हो सकता है या मैं सही हो सकता हूँ। अब दोनों में सही वो होगा जिसने सही रिसर्च करी होगी, सही एनालिसिस करी होगी। हो सकता है सही रिसर्च करने के बाद भी मैं गलत हो जाऊँ, डजेंट मैटर, बट मेरे को ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे मालूम है ये कहाँ तक जा सकता है। अब कोई स्टॉक है वो अपने भाव से अगर 80% भी नीचे गिर गया, तो उसके अंदर इतनी काबिलियत होती है कि वो उस भाव से भी 80% नीचे गिर जाएगा। यानी 100 रुपये से वो अगर 20 रुपये आ गया है, तो वो 20 रुपये से भी 4 रुपये आ जाएगा। उसके अंदर इतनी काबिलियत है, और वो 4 से भी फिर 80% गिर जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे कोई अच्छा स्टॉक है, अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला स्टॉक है, तो वो 80% गिरने के बाद वापस से 80% चला जाएगा या अपने भाव पे आ सकता है। डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्टॉक है, कौन सी कंपनी है। जो मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था, एग्जाम्पल है रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस कम्युनिकेशन। रिलायंस कम्युनिकेशन 800 रुपये का स्टॉक आज 8 रुपये भी नहीं है, और कितने साल हो गए। आई थिंक श्रीनिवास सर को पता होगा, 2008 की कहानी है, वो गिरना शुरू हुआ और आज भी वो 4 या 5 रुपये पे, आई डोंट नो कितने रुपये पे। बट रिलायंस 3000 रुपये से ऑलमोस्ट 800 रुपये आ गया था, बट अभी वापस से वो 2200-2300 रुपये आ गया है। सो वो स्टॉक कौन सा है, वो कंपनी कौन सी है, बहुत मैटर। सी अगेन, स्टॉक का प्राइस और स्टॉक का नाम कभी भी स्टॉक को नहीं चलाते। उसके पीछे का ड्राइवर है उसकी कंपनी। यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, नॉट इन अ स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे ग्रुप का पार्ट भी हो तो आपको पता होगा, वरुण बेवरेजेस मेरा फेवरेट स्टॉक है, और मैं इसको ऑलमोस्ट 1 साल से खरीद रहा हूँ। मैंने बहुत बताया भी लोगों को कि क्यों अच्छा है। वो 700 रुपये का स्टॉक 1 साल में 1500 रुपये हो गया, और वो जाते ही जा रहा है ऊपर। इट इज़ नॉट दैट कि वो ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है। वो क्यों अच्छा है, क्योंकि उसका बिजनेस देखो आप पीछे, उसके बिजनेस रीजंस देखो कि वो स्टॉक क्यों चलता है। ये इसलिए नहीं चलता है स्टॉक कि स्टॉक का प्राइस ज़्यादा अच्छा होता है, स्टॉक इसलिए चलता है कि उसका बिजनेस ज़्यादा अच्छा है। तो आपने अगर अच्छी पढ़ाई करी होगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट में नौकरियां अच्छी हैं, सैलरी अच्छी मिलती है इसलिए आपको अच्छी सैलरी मिल जाए, नहीं, आपके अंदर काबिलियत है इसलिए सैलरी अच्छी मिलेगी आपको। तो हमें यही देखना चाहिए कि स्टॉक गिर गया है तो क्या हुआ। प्लस अगर मैं वही बेसिक, अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मैं किसी, मेरे पास जो भी स्टॉक्स हैं, मेरे पास 1-2 ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो 20% 25% गिरे हुए हैं मेरे करंट, मैंने जो खरीदा था उससे। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो स्टॉक हैं जो जिस दिन मार्केट चलेगी तो वो 1 हफ्ते में उसको कवर कर लेंगे, मुझे मालूम है। सॉरी, 1 महीने में कवर कर लेंगे, बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ। तो मैं उनको नीचे गिरने पे और खरीदता हूँ, एवरेज करता हूँ। अच्छे स्टॉक लाइक एशियन पेंट है या इन्फी है। अब अगर इन्फोसिस, एशियन पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, रिलायंस ऐसे स्टॉक ही रिटर्न नहीं देंगे तो ठीक है, फिर पैसा बैंक में रख सकता हूँ मैं, और कोई ज़रूरत ही नहीं है लगाने की। तो उन स्टॉक में, बट अगर मेरे को फॉर एग्जांपल कोई पेनी स्टॉक था जो 2 रुपये से 2000 रुपये तक चला गया, फॉर एग्जांपल टाटा टेली सर्विसेज TTML 5 रुपये से पता नहीं कितना चला गया था वो, मैं उसमें एक भी पैसा नहीं लगाऊंगा। और अगर लगाया भी होगा ना तो मैं जहाँ मौका मिलेगा निकल जाऊंगा, बिकॉज उन स्टॉक में फंस जाते हैं आप। फॉर एग्जांपल अदानी के स्टॉक्स ले लो आप। अदानी स्टॉक्स बहुत चले, कोरोना टाइम से लेके बहुत चले, बट प्रॉब्लम थी क्या, हम तो भेड़ चाल में रहते हैं ना, कि देख लिया कि सब स्टॉक चल रहा है तो हम खरीद लेंगे। हम ये देखेंगे नहीं कि चल क्यों रहा है, क्या खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। अदानी प्रॉफिट में नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, हम खरीद रहे। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ। अगर हो सकता है स्टॉक बढ़ जाएगा तो ठीक है यार, बढ़ गया, 5000 स्टॉक लिस्टेड है, आप कितने स्टॉक्स खरीद सकते हो, यू कांट बाय एवरी स्टॉक। फर्स्ट थिंग इज कि ठीक है, अगर मेरे को साल का 15% रिटर्न मिल जाता है, बहुत है ये 15% रिटर्न फॉर 15 साल के लिए, मेरे को करोड़पति तो बना ही देगा ना। अगर मैं
ऐसा 15% एवरेज रिटर्न साल का मिलता है। मेरा पर्पस करोड़पति बनना है, बन जाऊंगा मैं। मेरा पर्पस अडानी के स्टॉक खरीद के करोड़पति बनना है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उसमें डूबने के चांसेस ज़्यादा है। बिजनेस है नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है नहीं, तो मैं उसमें नहीं लगाऊंगा। रिस्क ले रहा हूँ, कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ रिस्क ले रहा हूँ। मैं कैलकुलेटेड रिस्क लूँगा तो ज़रूर है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाते। हम रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, बिल्कुल वो बॉर्डर के जवान की तरह होते हैं कि कोई गोली आएगी लग जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट वो देश पे मर मिटना और अपने पैसे को मिटाने में फ़र्क है। हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। हमने 100 रुपये का स्टॉक खरीदा, उसको हम चाहते तो हैं 200 रुपये चला जाए, लेकिन ये नहीं देखते कि वो 50 रुपये आएगा तो क्या करना है मुझे, क्या मुझे निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए। ये सब कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाते। फिर वही होता है, हम ट्रेडिंग करने आए थे और फिर हम इन्वेस्टर बन के रह जाते हैं और फिर हम फंस जाते हैं स्टॉक में। नहीं, तो मेरा ये कहना था कि मतलब अभी हम तो उधर निकल नहीं पाए बराबर इस लेवल पे, तो मेरे एक समझो स्टॉक अच्छा रहेगा तो 5-6 महीने में रिकवर भी कर लेगा। अगर समझो मेरा जो सोचना था वो गलत था और स्टॉक वैसा नहीं निकला, तो फिर उसको लास्ट में एवरेजिंग करना चाहिए क्या फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ये मानना है कि कुछ स्टॉक्स को छोड़ के, मतलब कुछ स्टॉक, मतलब अगर 10-15 स्टॉक्स होंगे उनको छोड़ के बाकी किसी भी स्टॉक में नीचे गिरने पे एवरेज नहीं करना चाहिए, ऊपर जाने पे एवरेज करना चाहिए। ये मेरा मानना है। आप डिफर भी कर सकते हो। लोग यूजली एवरेजिंग का मतलब समझते हैं स्टॉक जब नीचे गिरे तो एवरेज करो। मैं प्रॉब्लम बताता हूँ क्यों, क्या होती है प्रॉब्लम। जब कोई स्टॉक 100 रुपये था और वो 50 रुपये आया तो वो 50% गिर गया। अब वो 50% गिर गया, अब आपके भाव पे आने के लिए उसे 50% नहीं चलना है, उसको 100% चलना है। तो पहले तो अपने करंट भाव से उसको डबल होना पड़ेगा। ओके, उसको डबल होना पड़ेगा। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो डबल होगा तो उसकी मार्केट कैप भी डबल हो जाएगी। अब अगर एक स्टॉक, उसकी मार्केट कैप 10 लाख करोड़ है, क्या वो 10 लाख करोड़ के बिजनेस को 20 लाख करोड़ होने में कितना टाइम लगेगा? रिलायंस को अपने बिजनेस को डबल करने में कितना टाइम लगेगा? आपको लगता है कि 4 से 5 साल में रिलायंस अपने बिजनेस को डबल कर सकता है? इतना बड़े कंपनी कैसे कर लेगा? तो ये प्रॉब्लम होती है कि वो स्टॉक डबल नहीं हो सकता। प्लस अब जब 100 रुपये से वो गिर के 50 रुपये आया था ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 60 रुपये पे खरीदा होगा, 70 पे खरीदा होगा, 80 पे खरीदा होगा, 100 पे खरीदा। अब जो 50 से 60 आएगा ना, तो वो चाहते हैं हम निकल जाऊँ मैं यहाँ से, तो वो उसे बेचना शुरू कर देते हैं। तभी आप देखोगे जब भी कोई स्टॉक गिरता है, अगर वो बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है, तो वो जब भी ऊपर जाता है उसमें सेलिंग आती है। एग्जाम्पल देख लो, अडानी एंटरप्राइज देखो आप, 4000 रुपये से गिर के 1000 रुपये तक आया और अभी भी 1600-1700 के आसपास ही है इतने टाइम से। क्योंकि जब भी वो ऊपर जाता है उसमें सेलिंग आ जाती है, क्योंकि जब लोगों को निकलना है, वो तो मौका ढूंढ रहे हैं कि भाई ये मेरे इस भाव पे आ जाए, मैं निकल जाता हूँ, तो वो वहाँ पे निकलना शुरू है। वो जैसे निकलना शुरू होंगे स्टॉक वहाँ से गिर जाता है। तो कई बार वो स्टॉक साइडवेज हो जाता है, मतलब 500 रुपये की रेंज में ही ट्रेड करता रहेगा काफ़ी टाइम तक। फिर हमारा पेशेंस लूज हो जाएगा, हम कहीं ना कहीं लॉस पे निकल ही जाएंगे। तो उसको एवरेज करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बशर्ते कि वो स्टॉक का बिजनेस अच्छा होना चाहिए। फॉर जैसे मैंने बोला आपके एशियन पेंट हो गया, HCL हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये गिरेगा तो मैं एवरेज नीचे पे करूँगा। बट अगर उसकी जगह कोई स्टॉक, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर कोई सा स्टॉक है, कोई भी XYZ स्टॉक है, वो अगर मेरे करंट भाव से ऊपर जाता है और मुझे लगता है इसमें अच्छा रिटर्न आ सकता है, तो मैं उसे तब एवरेज करूँगा। 100 का जब वो 150 होगा तो मैं और ख़रीदूँगा, क्योंकि अब मेरे को फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अब वो 150 से अगर 170 जाएगा तो मुझे और फ़ायदा मिलेगा, क्वांटिटी बढ़ जाती है, तब मैं उसे एवरेज करूँगा। प्लस एवरेज करने से बेटर है कि आप अपने को और डाइवर्सिफाई कर लो, मतलब ओवर डाइवर्सिफाई मत करो, और डाइवर्सिफाई कर लो। उस सेक्टर के दूसरे स्टॉक को लगा लो या किसी और दूसरे सेक्टर में पैसा लगा लो। पैसा ही लगाना है ना, तो दूसरे में लगा लो, ये भी कर सकते हो। तो एवरेज नीचे करना इतना सही नहीं होता है, क्योंकि मुश्किल होता है कि आपके प्राइस तक वो जाए। आपने इवन 50 पे आने पे भी एवरेज किया तो भी आप 40% के लॉस पे तब आ गए एवरेज होके। 40% चलना स्टॉक के लिए बड़ी बात है।
जल्दी नहीं चलता है स्टॉक, कोई भी स्टॉक 40% और कितना टाइम में चलेगा ये डिपेंड करता है ना। हम वेट कब तक करेंगे। वो अगर 5 साल में 40% का रिटर्न देगा तो 5 साल तक क्या हम होल्ड करेंगे? नहीं। तो फिर हमने जो एवरेज किया था ना वो भी नेगेटिव में आ जाएगा मेरा। और अगर वहाँ से और नीचे आ गया तो क्या करेंगे? और एवरेज करेंगे। तो फिर वो तो जो मजाक में कहा था ना कि इतना एवरेज कर लिया है कि अब कंपनी का मालिक बन जाऊँगा एवरेज कर करके। तो इन सब चीज़ों में मतलब यार मेरा मानना है कि इतना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। मतलब यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है कि सब कुछ पढ़ लो। पर्पस पैसा कमाना है, 5-6 तरीके निकालो, उनको फॉलो करो, पैसा बन जाएगा। छोटे छोटे प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा है ना। रातों रात अमीर बनने से अच्छा है कि 1000 रुपये हफ्ते का भी कमा लो तो बहुत बड़ी बात है। और एक दूसरा कुछ नहीं था कि जैसे कि आप बोल रहे कि कंपनी का फंडामेंटल वो ये होना चाहिए, तो आपने तो कहाँ कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी, समझो अभी जैसे कि हम लोग तो समझो अभी टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को टेलीकॉम सेक्टर के बारे में पता है, लेकिन ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में पता नहीं है कि सही में वो कंपनी सही काम कर रही है कि गलत काम कर रही है। आप गाड़ी कौन सी चलाते हो? मैं तो मारुति की चलाता हूँ। मारुति की क्यों चलाते हो? हुंडई की क्यों नहीं चलाते हो? आपने गाड़ी खरीदी थी तो क्यों मारुति की खरीद ली? मारुति खरीदी ये सोच के खरीदी थी कि मारुति मतलब उसका सर्विस सेंटर कहीं भी अवेलेबल है। तो ये सब आपको पता कैसे चला? से कीमत कम है। ये सब पता कैसे चला? आपने कहीं ना कहीं गूगल पे किया होगा, रिसर्च किया होगा। आपको कोई भी कंपनी है गूगल पे डाल दो, उसका सारा लेखा जोखा मिलना है आपको। सिर्फ जो नहीं कर पाते आपसे, मतलब इंडिविजुअल आपकी नहीं, हम इन्वेस्टर्स जो नहीं कर पाते हैं, हम टाइम देके, पेशेंस देके उसके बारे में पढ़ना नहीं चाहते। हर कंपनी हर क्वार्टर में अपने रिजल्ट डिक्लेयर करती है, अपनी बैलेंस शीट डिक्लेयर करती है। जो रजिस्टर्ड है उनको करना ही करना है, हम उनको पढ़ते नहीं। बैलेंस शीट भी पढ़ने के लिए वो भी 250-300 पेज का बैलेंस नहीं, तो उसके लिए कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपको वो सारी चीज़ों को छोटा करके सिंपल लैंग्वेज में बता देती हैं। तो वो मैंने बहुत बार शेयर भी किया। आप वहाँ पे जाओ, सिर्फ देखो, और मतलब 50 चीज़ें मत देखो। 50 हम नहीं हैं, हम इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, वो सीए या ऐसे कुछ बैकग्राउंड से नहीं जो ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म्स हम समझ पाए, और ज़रूरत भी नहीं है हमें उसकी। मेरे को सिर्फ ये देखना है कि ये बिज़नेस क्या करता है, मैनेजमेंट कौन है, वो हमें पता चल जाएगा गूगल करके। वो उनका बैकग्राउंड क्या है वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि अगर कंपनी का मालिक भरोसेमंद नहीं है तो वो कंपनी अच्छी नहीं हो सकती है। और मेरे उस बिज़नेस में ग्रोथ क्या होने वाली है, आगे क्या होने वाला है, ये मुझे गूगल से पता चल जाता है। इसके पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है, अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो मेरे मतलब 8 क्वार्टर का रिजल्ट तो मुझे उसका देखना चाहिए। और रिजल्ट का मतलब बैलेंस शीट नहीं पढ़नी है, उसके सेल्स कैसी रही है, उसका प्रॉफिट कैसा रहा है, उसकी डेट का जो रेशियो रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो वह कैसा रहा है, और कुछ और मतलब देख सकते हैं कि रिटर्न उसने पिछले 10 साल में क्या दिया है। अब हमें एनालिटिक्स करनी है। हमारे पास 5, 6, 8 पॉइंट्स होंगे और उनको कोरिलेट करना है। हो सकता है उसका रेवेन्यू पिछले हर साल 20% से बढ़ रहा था, बट उसका प्रॉफिट तो 2% ही बढ़ रहा है। बट मैं इंडिविजुअल प्रॉफिट को देखूंगा तो लिखेगा कि हाँ 100 करोड़ हुआ, फिर 120 करोड़ हुआ, फिर 140 करोड़ हुआ। बट मेरा 100 करोड़ का प्रॉफिट जब उसने 1000 करोड़ का रेवेन्यू किया था तब हुआ था, और अब 120 करोड़ का प्रॉफिट जब वो 4000 करोड़ का रेवेन्यू करता है तब हो रहा है। तो से रेवेन्यू टू प्रॉफिट जो शेयरिंग है ना, रेशियो है, वो भी मैटर करता है। अब ये कोई बता के नहीं देगा, ये थोड़ी सी हमें मैथ्स लगानी पड़ेगी अपनी और करना पड़ेगा। वही वाले था ना, मारुति जब आपने खरीदी तो आपने देखा था कि उसमें कितने सिलेंडर लगे हैं, उसका एवरेज क्या आता है, वो उसमें एयर बैग्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें देखी थी, तब आपने मारुति खरीदी थी, मारुति की कार। तो वही स्टॉक खरीदने से पहले बेसिक कुछ चेकअप्स हमें करने पड़ेंगे, और वो हमें तब स्टॉक को खरीदा जा सकता है। बिजनेस वो आराम से, मतलब ये कोई आप एक बार प्रैक्टिस में आ जाओगे ना, जैसे मैंने बताया, मैं तो फाइनेंस के नाम पे 1 नंबर का बेकार आदमी था, मुझे पता पढ़ने का मन भी नहीं करता, मैं अपने फॉर्म 16 भी नहीं समझ पाता था। बट अब मजबूरी यही थी कि समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझेंगे, मैं नहीं समझूंगा तो अपनी आगे की जनरेशन को भी ऐसे ही बना दूंगा जैसे मैं हूँ।
तो वो मुझे नहीं चाहिए था। तो मैं इसमें पढ़ा, समझा, इंटरेस्ट नहीं था, सीखा। आज के टाइम पे इंटरेस्ट आ रहा है मुझे इस चीज़ में कि हाँ, अब अगर आप मेरे ग्रुप में आप देखोगे कोई भी स्टॉक होता है तो मैं हमेशा उसके फंडामेंटल्स पे बात कर रहा हूँ। अगर मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ तो ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं हमेशा चार्ट पे बात करूँगा। मेरे पास दो ही चीज़ें, फंडामेंटल, टेक्निकल। उस तीसरी चीज़ पे मैं बात ही नहीं करता हूँ कभी। कोई पूछे स्टॉक बता दो, स्टॉक मैं नहीं बताऊँगा, बिकॉज स्टॉक बता के मैं क्या करूँगा जब तक मैं उसके बारे में स्टडी नहीं करूँगा। तो आप उसके बारे में दो तीन वेबसाइट्स हैं, ऐसा भी नहीं कि 1000 वेबसाइट पे जाके चेक करना है, कुछ नहीं। 2-3 वेबसाइट्स हैं, उनको फॉलो करो, उन पे करो, बस खत्म। न्यूज़ बिल्कुल मत देखो, न्यूज़ देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, साइट मैं को ना इस पे दे देता हूँ, बस चैट पे ही दिख देता हूँ कैसे आती है इसमें चैट, ये ना एक है स्क्रीनर है, उस पर अच्छा जाता है, screener.in करके है, इस पे अच्छी मिल जाती है। उसके बाद टिकर टेप है, टिकर टेप पे भी अच्छा मिल जाता है। प्लस आपको बाकी कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, बट वहाँ से निकालना थोड़ा मुश्किल है कि बट ये लोग बहुत ही क्यूरेटेड इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको दे देंगे जितनी भी वेबसाइट्स हैं। तो आपको काफ़ी डिटेल में पता चल जाएगा उस कंपनी के बारे में। और अगर कोई है तो मतलब मेरे वीडियोस भी आप देख सकते हो। स्क्रीनर पे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकल रहा है। हाँ, तो मैं स्क्रीनर ही फॉलो करता हूँ, मुझे कुछ भी निकालना है मैं स्क्रीनर ही फॉलो करता हूँ। हाँ, बट अगर बिकॉज वो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें कम बताते हैं स्क्रीनर पे, ऑल्दो होता है, बट फिर मैं कंपनी की वेबसाइट पे जाके या उसकी कोई इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होती है हर कंपनी के पास होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हर क्वार्टर में वो रिलीज़ करते हैं वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। अगर आप एक बार पढ़ लो तो हर बार नहीं पढ़ने की ज़रूरत, तो आपको कंपनी का जो एटीट्यूड है वो पता चल जाएगा कि कंपनी किस तरह से सोचती है, मैनेजमेंट किस तरह से सोच रहा है, तो आपको वो समझ में आ जाएगा वहाँ से। ओके, थैंक यू ऋषिकेश। बाकी यूट्यूब पे आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, मैं मोस्टली शॉर्ट वीडियोस डालता हूँ, छोटे छोटे 1-1 मिनट के सेशंस होते हैं वो, तो उसमें काफ़ी कुछ मैं शेयर करता हूँ, कुछ ह्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शेयर करता हूँ। और स्टॉक टिप्स कभी नहीं मिलेगी मेरे पास से कि कोई स्टॉक बता दूँ मैं। सो प्लीज़ स्टॉक टिप्स के लिए कभी कोई ना है, वो अच्छा नहीं लगता मुझे भी है। बाकी एडवांस ट्रेनिंग का सेशन कब देने वाले? अभी इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, मैं पर्सनल चीज़ों में काफ़ी बिजी हूँ 2-3 महीने के लिए। तो उसके बाद हम यूजली जुलाई के बाद से स्टार्ट करेंगे। तो और मैं थोड़ा एडवांस ट्रेनिंग का अपना कंटेंट भी चेंज कर रहा हूँ, मतलब मैं वो नहीं कंटेंट नहीं देना चाहता हूँ जो बाकी लोग दे रहे होंगे, कि बिकॉज मेरे ट्रेनिंग सेशन ऐसे ही होते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं। मैं कोई लाइव क्लासेस वैसे टाइप के नहीं दूंगा, और कोई मेरे पास कंटेंट ऐसा रेडी नहीं है जो मैं दे दूँ और आप पढ़ लो। तो ये 1-to-1 होता है, मतलब मुझे बेस्ट ट्रेनिंग वो लगती है जो आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सके। मैं बता दूं और आपकी क्वेरीज 50% ही सॉल्व होंगी तो फ़ायदा नहीं है। तो जैसे हमने करा है, ट्रेनिंग सेशन किया है, तो वैसे ही मेरा रहता है। और इट इज़ नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर टॉपिक, आप कुछ भी पूछ सकते हो उसमें भी। तो बाकी लोग भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज होती हैं आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप है मेरा, उसे ज्वाइन कर सकते हो। बट उसमें अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्टॉक टिप्स मिलेगी, मैं ट्रेड बताऊंगा, तो थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, मैं कुछ ट्रेड लेता हूँ तो मैं कभी कभी उसमें शेयर कर देता हूँ, बिकॉज जैसा मैंने बोला मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं ऑथराइज नहीं हूँ कोई ट्रेड देने के लिए, और वो ठीक भी नहीं है, क्योंकि मेरा ट्रेड लेना मेरा रिस्क होता है। तो आपका अपना रिस्क क्या है वो समझना ज़रूरी है, तो आप ट्रेड लो। बट बाकी नॉलेज के लिए ज्वाइन करना है डेफिनेटली, मैं व्हाट्सअप का लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, और आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो हम क्लोज करते हैं ये, और अगर अच्छा लगता है तो और भी लोगों तक पहुँचाइए। यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर लेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, और वीडियोस बनाएंगे और ऐसे सेशंस करेंगे। और अभी बीच में कुछ ऐसा होने लगा है तो कि मेरे नाम से 1-2 लोग पिंग करके कुछ ट्रेड देने की कोशिश कर रहे हैं, पेड ट्रेडिंग कॉल्स ऐसा करके, तो प्लीज़ उसे अवॉइड करिए। मेरी तरफ से कभी भी कोई पेड
वैसे भी ट्रेडिंग कॉल्स नहीं होती, कोई पेड ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। तो प्लीज़ बेवेयर ऑफ ऑल दोज फ्रॉडस्टर्स। फिनवे ऑफिशियल के नाम से या मेरे नाम से कुछ भी आता है तो वो मैं नहीं हूँ। मेरा होगा तो मैं डायरेक्टली आपसे बात करके जो भी सेशंस होंगे उस सेशन में ही बताऊँगा। तो अपने पैसे को बचा के रखिए प्लीज़। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हम फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कभी। थैंक यू थैंक यू सो मच। सो मच।